she is playing, you know, they are taking my name. So I said कि Bigg Boss 14 भी शायद मैं ही चला रही हूँ. I'm the queen. इसीलिए तो जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्वीन है उसने मुझे क्वीन बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा. वेलकम टू पिंकविला शिल्पा. थैंक यू. मुझे पहले पूछना था कि पौराशपुर आपका डिजिटल डेब्यू है एंड यू नो यू आर प्लेइंग अ फियर्स क्वीन. सो व्हाट वाज इट, यू नो, स्क्रिप्ट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा कि आपको मुझे इसी में डिजिटल डेब्यू करना है? Yeah, actually I was waiting for good subject and I was actually you know worried about कि OTT platform पे बहुत सारे you know commitments होते हैं, like contract में लिखा जाता है ये सीन है, ये है, वो है. उसके बाद भी मुझे इस तरह का सब्जेक्ट पसंद आया. वो मेरे लिए खुद एक सरप्राइज़ था, लेकिन मुझे सच में पता नहीं इस सब्जेक्ट में एक कोई चीज़ें किक कर गई कि यार हाँ ये कुछ अलग है, ये मुझे करना है. और अगर हम यू नो ट्रेलर में जो देखेंगे आपका कैरेक्टर कह सकते हैं कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यू कैन से दैट. आपको कहीं, क्योंकि वी नॉट यूज्ड टू सीइंग यू यू नो इन सच रोल्स, सो आपको कहीं डर लगा कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, व्हाट विल द फैंस थिंक, ऐसा कुछ डर आपको हुआ? नहीं, मुझे थोड़ा सा था मेरे थोड़े कॉशंस को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बॉडी बेस्ट हो तो आप एक्सपोज करो और नहीं हो तो नहीं करो. मेरा ऑलवेज मेरे लिए, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होती हूँ इवन पर्सनल लाइफ में भी. कपड़े पहनते वक्त मैं खुद ऑर्थोडॉक्स हूँ, सामने वाला हो या नहीं हो. मैं खुद अपने आप को कुछ चीज़ों में देखना पसंद नहीं करती, तो वो मैं नहीं पहनती. तो मेरी वो चीज़ें थी कि थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को लेकर था. देन सीन्स अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट है वो आप करो, अगर नहीं है स्क्रिप्ट वाइज तो नहीं है. और जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे पहले से ही कंप्लीट क्लियर था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये है, और ये सीन है, ये नहीं है. सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट. मुझे ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था कि कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंगली हुई है चीज़ें, यू नो, जैसे मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी चीज़ मिले और ऐसा हो. ग्रेस ऑफ द गॉड ऐसी चीज़ें हुई है. Speaking of your projects, I have to touch upon Gangs of Filmistaan. Yeah. And what happened. Obviously, it became a big controversy with your side and their side. It became a big thing, basically. True. And you'd even said, you know, in our interview itself, in a previous interview, you had said that Sunil Grover had treated you like a junior artist. Yeah. So if there was ever a chance, a very good project in the making, but Sunil Grover is in it, will you do it, or you'd rather stay away from it? Like you said, projects are important. Yeah, definitely projects are important, but हाँ, then the way depends कि maker कौन है, you know, who's doing that, and you should give that you know respect to each and every artist. Like, not I'm the best. Like I had worked with Annu Kapoor, you know, done, मतलब he's so down to earth, he's so kind कि ये लाइन मीरावती की जाती है, ये मीरावती को दो लाइन. So he was like that. So this was not happened with Sunil ji. Okay. No doubt Sunil ji is a very good actor. मैंने उनसे बहुत सीखा है. You know, I just love him. Yeah, because you all had a cordial relationship. Yeah, I love him. But मैं वाकई में उनको देख के मतलब मैं अपने डायलॉग भूल जाऊँ या होते ही नहीं थे. But he is superb. So मेरा था कि मैं नहीं इनके साथ फाइट कर सकती, ना कंपटीशन कर सकती. Let him do it. Okay. उनको दे दो अपनी स्पेस. बट वो उनको सोचना चाहिए कि मेरे साथ एक अच्छा आर्टिस्ट है तो मैं उसको भी, इट्स अ गिव एंड टेक. जैसे मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर कहानी घूमे. मुझे चाहिए कि हर इंसान बेस्ट हो. और एवरीथिंग आई वांटेड टू पार्ट ऑफ दैट बेस्ट यू नो थिंग कि अरे यू आर देयर इन दैट शो. ओके, अच्छा इट्स योर शो से ज़्यादा अच्छा यू आर देयर एंड यू आर लुकिंग नाइस. यू नो, कॉम्पिटिशन चाहिए मुझे उन लोगों के साथ, बट नॉट लाइक सुनील जी. लाइक, you know, similarly, people obviously loved you in Bhabiji Ghar Par Hain. And one thing that fans really admire about you is how you're no filters. Like when something is bothering you, you will go out and you will talk about it, which usually in your industry nobody talks about it. And I want to like say it verbatim, I don't want to like say it wrong, but Asif Sheikh had said in a recent interview that he did not take a stand for you know, for the show, because he felt that you had not taken a right stand for yourself. And he also said that
it was not done on your part because Bhabiji was the only silver lining in your career. This is what he has said. So what I wanted to ask you, has there ever been a time where you have regretted quitting the show because it was a landmark show for you? Yeah. Obviously you've had other projects, but that is what people adore you for. So have you had any regrets quitting? No, but I think this Silver Line show, it's a wrong concept because I think That's restricting yourself yeah, into one. yeah. And Bhabhi was my first show, was very popular. It's a UTV project, afternoon slot. It was very, yeah, I still remember Ekta Kapoor show was, Kasauti was Zindagi Ki there, and Kamolika was very famous. And I was in Bhabhi show, Manju character, and the people used to say कि you're the same popular like Kamolika. You know, they're comparing you with Kamolika. That is a like very big thing. It's because a compliment. it's a first afternoon time slot. You know, the Kumkum and Bhabhi, there was a very big show. And I was working, मतलब मैं जो भाभी कैरेक्टर कर रही थी उससे ज़्यादा काम मैं कर रही थी. You know, it was a negative, positive, both shade, psycho character. So done that. So Silver Line again. Then I done Chidiya Ghar. Then a lot of shows. Maika was very nice. Maika show was that time one controversy happened. 11-12 artists को निकाल के they took me and Aruna ji enter. Aruna Irani ji. So show की TRP बहुत बढ़ गई थी. So it's not like that के. Or there was very popular show again. Then Chidiya Ghar was very good show. Bhabhi ji is like कल्ट के, मतलब एक होता है ना कि जैसे आज भी अभी भी हम शाहरुख जी को दिलवाले दुल्हनिया का भूल ही नहीं सकते. वो एक तो वो हमेशा वही नहीं रहेंगे ना. आफ्टर दैट ही हैज गिवन लॉट ऑफ अदर फिल्म्स एज वेल, बट वो कैरेक्टर भाभी जी इज लाइक दैट. You know, the other thing that people loved you for is obviously Bigg Boss, especially you know, the way you conducted yourself during, and you've been through a lot in those few months. So with the recent Bigg Boss that's happening, you know, with Vikas and Arshi's entry into the house, and especially, you know, Vikas has said that Arshi's trying to be the next Shilpa Shinde. So do you think he's doing it for grabbing eyeballs? Do you think that your name is being mentioned for that? See, I really don't want to talk about him, and I'm really not watching Bigg Boss. Okay. I'm not watching. उसके बारे में बात करके मतलब ही नहीं है. Like I know about that Arshi is playing, you know, they are taking my name. So I said कि Bigg Boss 14 भी शायद मैं ही चला रही हूँ. I'm the queen. इसीलिए तो जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्वीन है उसने मुझे क्वीन बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा. No, but then again, I know I'm bringing up Vikas's name again. I really don't want to talk about him. I don't want to give him footage at all. But do you think that he's playing the victim card? Because a lot of actors have come out in the open, even in this show, where they've spoken about... For me, who is he? Yeah, who is he? Don't even talk about him. Seriously, I don't want to, because इसके ऊपर वो मुंह बना के sympathy gain करेगा, and not worth your time.